अस्सलाम प्यारे बच्चों, आज करना इस क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर गोबर ये पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर क्लास 8 इम्प्रूव कर गोबर सत क्वेश्चन आज तुल क्वेश्चन नंबर 8 गोबर क्वेश्चन नंबर 8 गोबर डिस्क्राइब द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन योर ओन वर्ड्स अस कर डिस्क्राइब ग्रीन हाउस इफेक्ट कत वन यह क्या गो greenhouse effect may lead to global warming. Greenhouse effect is क्या है lead to global warming. global warming. Global warming से गोर में already वोनमुत global warming का चीज़ वना that is an overall increase in the average temperature of the earth. ये मतलब गो an overall increase in the average temperature of the earth. Earth पर जो temperature आसान चे इमु एवरेज टेम्परेचर जमीन पर आसान तथ मज इनक्रीज गसन टेम्परेचर इनक्रीज गसन सह पे इफेक्ट कम सत गोबर ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट इज काज्ड बाय द ग्रीन हाउस गैसेस ग्रीन हाउस इफेक्ट किस पे गसान ग्रीन हाउस गैसेस सत कमो गैसेस सत एग्जांपल्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इंक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड सत गोबर मीथेन एंड वाटर वेपर्स गो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस सत मीथेन सत वाटर वेपर्स सत व्हेन सोलर रेडिएशंस रीच द अर्थ ये आफ्ताब पे सोलर रेडिएशन वाता कोतान जमीन पे पे सम ऑफ दीज रेडिएशंस आर एब्जॉर्ब्ड बाय द अर्थ एब्जॉर्ब गो जज़ब कर मज कह रेडिएशन जमीन कर पानस मज जज़ब एंड देन रिलीज बैक पच कर यह बैक वापस कराम रेडिएशंस टू द एटमॉस्फेयर ग्रीन हाउस gases present in the atmosphere trap these radiations greenhouse gases im asan atmosphere mein asan sun ta me won carbon dioxide methane water vapors kya karan gobar kaam in the atmosphere trap these radiations and do not allow heat to leave panas mein trap karan वापस travan aur kin this helps us in keeping our planet warm क्या गसान सोन planet अर्थ यह गर्म and thus helps in human survival इस पे humans living organisms तुम बचत however an indiscriminate increase in the amount of greenhouse gases ये greenhouse gases उन गैस मकदार ज़्यादा गस can lead to excessive increase in earth's temperature तम earth's temperature average temperature so temperature increase गसित ये temperature increase गसान तम क्या गसान पत leading to global warming तम global warming गसित पत गोबर question number 8 prepare a brief speech on global warming you have to deliver the speech in your class अच कर speech दिन कत पे गोबर global warming पे Global warming is an increase in the average temperature of the Earth's surface. Global warming is already one में बे बनता है global warming क्या गोबर an increase in the Earth's temperature. Earth's temperature आसान average temperature आसान अत अचानक increase गसन तथ गोबर वना global warming surface it occurs as a result of an increased concentration of greenhouse gases in the atmosphere. क्या गसान गोबर it occurs as a result of an increased concentration of greenhouse gases in the atmosphere. The greenhouse gases include carbon dioxide, methane and water vapors. These gases trap solar radiations released back by the earth. This helps us in keeping our planet warm and thus help us in human survival. However, an increase in the amount of greenhouse gases can lead to an increase in the Earth's temperature, leading global warming. I think this is answer go बोल लेकिन इसमें question number 8 लिखना होता है same सी answer लिखना go बोला तो ये लिखा था पच question number 10 is go describe the threat to the beauty of Taj Mahal. खतर threat go बोल खतर इस Taj Mahal इसमें beauty च अत कुछ खतर च इस beauty किस पे इसमें beauty च अत कुछ threat च अत क्या है गसित acid rain is already one is a major threat. You see, Taj Mahal at kim say खतर वत
तमि समिच ब्यूटी खराब गसित. That is, acid rain is a major threat to the beauty of Taj Mahal. When acid rain falls on the monuments that is completely made of marble. Çünkü Taj Mahal बनेमुत marble गोबर. Yet at पेवान acid rain, they react with marble to form a powder-like substance. Acid rain yel marble सहित react गसान छ रलान छ अथ सहित हम छ बनावान powder-like substance that is then washed away by the rain. Yus pat yel rood पेवान छ वाला अथ पानस सहित वाला अथ छत गोबर. This phenomena is known as marble cancer. At phenomena wana छ गोबर marble cancer. Marble cancer means yel marble shape gober change gets due to acid rain. Also, the soot particles emitted from the Mathura oil refinery located near Agra is leading to the yellowing of the marble. At industry ak yims Taj Mahal nazdik yim emek particles ch amo sait hek is beauty of Taj Mahal ch that hekim sait threat with it. So inshallah subhas to logo question number 11. Thank you.